I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. Mr. President, General Assembly, Excellencies, the fighting in Ukraine must stop. It's raging across the country from air, land, and sea. It must stop now. Russian missile and air bombardments have been pounding Ukrainian cities day and night. The capital, Kyiv, is encircled from all sides. In the face of the continuing attacks, Kyiv's 3 million residents are being forced to seek safety in their homes, improvised bomb shelters, and the city's subways. The Ukrainian government has distributed a meaningful number of arms to the population with the stated objective to participate in the defense of the country. According to UNHCR, 500,000 Ukrainians have fled across the country's borders. Although Russian strikes are reportedly largely targeting Ukrainian military facilities, we have credible accounts of residential buildings, critical civilian infrastructure, and other non-military targets sustaining heavy damage. This escalating violence, which is resulting in civilian deaths, including children, is totally unacceptable. Enough is enough. Soldiers need to move back to their barracks, and leaders need to move to peace. Civilians must be protected. International humanitarian and human rights law must be upheld. The sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders must be respected in line with General Assembly resolutions. Mr. President, we are facing a tragedy for Ukraine, but also a major regional crisis with potentially disastrous implications for us all. Yesterday, Russian nuclear forces were put on high alert. This is a chilling development. The mere idea of a nuclear conflict is simply inconceivable. Nothing can justify the use of nuclear weapons. Mr. President, we face what could easily become Europe's worst humanitarian and refugee crisis in decades, with the numbers of refugees and internally displaced multiplying by the minute. I am grateful for the compassion, generosity, and solidarity of Ukraine's neighbors who are taking in those seeking safety. यूक्रेन इमरजेंसी पर अभी एक स्पेशल जनरल असेंबली सेशन चल रहा है. Religion or ethnicity. The neighboring countries will need all our support in the days and weeks to come. The United Nations will continue to assist with these efforts. Mr. President, on Saturday, I spoke with President Zelensky and assured him that the United Nations would not abandon Ukrainian people and conveyed our determination to enhance humanitarian assistance. Even before the events of the past week, the UN was providing some 3 million people on both sides of the contact line with humanitarian assistance. The United Nations is now working 24 जैसे आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस टफ टाइम में, many more people desperate for protection and shelter. और ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए. Elderly people and those with disabilities. सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको इकट्ठा होके Stay and delivery for इस everyone इशू को affected by this सॉल्व deadly करना conflict चाहिए. across the country. Some of our personnel are expanding existing programs, and others are preparing new operations to get help to those who need it fast. I want to highlight 3 concrete actions. First, I've allocated $20 million from the Central Emergency Response Fund to support emergency operations along the contact line in the eastern oblasts of Donetsk and Luhansk and in other parts of the country. These will allow us to help more vulnerable people get the basics, shelter, food, water, and health care as soon as possible. Second, I've appointed Amin Awad as the UN Crisis Coordinator for Ukraine. He will liaise with the government and with all relevant actors on the ground, supported by the resident humanitarian coordinator and the UN country team.
At the same time, we are bringing together partners in and outside the country and surging personnel into the country. आवाज कम Third, tomorrow we will launch 2 coordinated emergency appeals for Ukraine and the region. One that addresses escalating humanitarian needs inside the country, including rising internal displacement, and another that responds to the needs of people crossing international borders to seek refuge in countries neighboring Ukraine. As we ramp up our efforts, our obligations to allow freedom of movement of humanitarian personnel and to facilitate safe, rapid, and unimpeded passage of humanitarian relief. I also urge the international community to mobilize in support of our funding appeals. एडुटेक टीम हमसे जुड़ रहे हैं ग्रेट सर This crisis, as well as other vulnerable groups whose numbers अभी जो यूएन का चल रहा है इमरजेंसी मीटिंग यूएन ने बुलाई है यूक्रेन सिचुएशन पे यूक्रेन जो इमरजेंसी है इसको डिस्कस करने के लिए it is simply treating the worst impacts of the conflict. The only true solution is peace. The attack on Ukraine जैसा आप देख रहे हैं कि इसने कहा है कि ओनली ट्रू सोल्यूशन जो है दैट इज पीस द सोल्यूशन डज नॉट लाई इन वॉर इट लाइज इन पीस Regional tensions are rising. The latest security measures underline the high stakes for all. The economic repercussions of the crisis will have widespread impact, and I count on every member state to live up to the principles of the Charter. Mr. President, the guns are talking now, but the passive dialogue must always remain open. It's never too late to engage in good faith negotiations and to address all issues peacefully. I hope that the direct talks now taking place between Ukrainian and Russian delegations will produce not only an immediate halt to the fighting, but also a path towards a diplomatic solution. I welcome and encourage all peaceful efforts to end the bloodshed and halt this conflict. पीसफुल एफर्ट्स को यहाँ पे इनकरेज किया जाता है यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है यूएन जनरल असेंबली में जो अभी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है It is death, human suffering, senseless destruction, and an senseless destruction and an immense distraction from the real challenges facing humanity. The climate crisis and biodiversity loss, vitally needed socio-economic recovery from the pandemic, healing the divides of race and gender, and so many other pressing 21st century challenges. Humanity cannot afford to be locked in a mindset that dredges up the worst of past centuries. जैसा इसने हाईलाइट किया है यहाँ पे कि एक तरफ से हम क्लाइमेट चेंज और रेसिज्म से लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ से हम ऐसे वॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो सारी कंट्रीज़ जो है जो भी रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं दुनिया के उनको इकट्ठा होके यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएट करना चाहिए ताकि ये वॉर जो है ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाए I thank the Secretary General for his statement. ये सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के जो अभी एड्रेस कर रहे थे यूएन जनरल असेंबली को I now give the floor to the distinguished representative of Ukraine. अभी यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं स्टेज पे देखते हैं इनका क्या कहना है ये जो अभी चल रही है यूएन जनरल असेंबली का जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है यूक्रेन रशिया जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पे डेलिब्रेट करने के लिए Mr. President, Secretary General, for the first time since the United Nations was born, there is a full-fledged war in the center of Europe. Everyone in this hall and everyone in the world knows that Russia and Russia alone
started this invasion, now facilitated by Belarus. This war was not provoked. It was chosen by someone who is right now sitting in the bunker. जैसे कह रहे हैं कि ये We know what happened यूक्रेन ने वॉर स्टार्ट नहीं किया है, वॉर रशिया ने स्टार्ट किया है in, और वो यूक्रेन को in May. इलीगली ऑक्यूपाई करना चाहते हैं. Before I continue with my formal statement, I would like to switch to Russian and invite you to put on the headphones. Because I would like to read from the screenshot of the smartphone of a killed Russian soldier. That's an actual screenshot from someone who is dead already. Лёш, Алёша, ты как? Почему How так are you долго doing? не отвечаешь? why has it been so long since you responded? Ты точно на учениях? Are you really in training exercises? Спрашивает мать битого солдата. Asks the mother of the killed soldier Моменты перед тем, как он был moments убит. before he was killed. Мама, я уже не в Крыму, Mom, I'm no longer in Crimea. не на учениях. I'm not in training. कौशल बॉय हमसे जुड़ रहे हैं. हेलो. Где? अभी जो यूएस का इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, यूक्रेन सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे एक सोल्जर का स्क्रीनशॉट ये यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. उन्होंने अपनी माँ के साथ शेयर किया था. What are you talking about? What happened? बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ये इन्होंने लिखा है अपनी माँ को. Тут настоящая война. There is a real war raging Мне here. страшно. I'm afraid. Бьем по всем городам We are bombing подряд. all of the cities по мирным людям. together, even targeting Нам civilians. сказали, что они We на... Thanks for giving information. You are welcome. Welcome us. Они кидаются под нашу технику. जैसा आप देख रहे हैं कि एक सोल्जर ने अपनी माँ को ये मैसेज लिखा है व्हाट्सएप पे, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये They call us यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएस यूएन जनरल असेंबली में, This was several moments before he was killed. तो ये सोल्जर अभी इस दुनिया में नहीं है. ही हैज़ बीन किल्ड. तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव कि कितनी यहाँ पे अनप्रोवोक्ड जो वॉर है जो रशिया ने स्टार्ट किया है यूक्रेन पर, Next to every nameplate of every इसकी वजह से कितनी सफरिंग्स in these लोगों को झेलनी पड़ रही है. more than 30 souls of killed Russian soldiers already. Next to every name of every single country in this assembly. 30 plus killed Russian soldiers. Hundreds of killed Ukrainians. Dozens of killed children. यहाँ पे बच्चे भी मारे गए हैं जो रशिया ने यूक्रेन पे जो बॉम्बिंग स्टार्ट की हैं, और सिविलियंस भी इसमें बहुत सारे इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे मारे भी गए हैं. When you will listen to my formal statement. तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है वॉर करने का जब अदर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको इनको रिजॉल्व किया जा सकता है. Has launched a full-fledged military offensive against a smaller neighbor aimed at invading the country. Deadly airstrikes dropped on civilians' heads across the entire country, and the Russian troops crossed Ukraine's borders from the territory of Russia, Belarus, and the occupied parts of Ukraine's Donbass and Crimea. जो रशियन ट्रूप्स हैं वो बेलारूस के थ्रू यूक्रेन में दाखिल हुए हैं और ये कॉन्स्टेंटली यूक्रेन के सिविलियन एरियाज़ पे Could be drawn with the beginning अटैक of the करके लोगों को परेशान कर रहे हैं. and
And the Russia's course of action is very similar. जैसे आपने देखा कि इंडिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, सिटीजन्स थे जो यूक्रेन में थे, उनको बहुत सारे लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं. Most recent example of human sufferings, example of war crime. As all of us were on our way to the General Assembly today, the Russian army shelled with Grad multiple rocket launcher systems the residential areas of the city of Kharkiv, the second biggest in Ukraine. Innocent civilians have been killed and wounded. The exact numbers is very difficult to estimate because of जैसा कि कह रहे हैं कि इनोसेंट लोग हैं जो यहाँ पे मारे जा रहे हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं. at the border with Belarus. तो इस वॉर को जल्द से जल्द स्टॉप करने की सारे जो ये भी Made this यूएन का इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, इसमें possible. इन सब का ये रेजोल्यूशन है. Grateful to the President of the General Assembly for his taking care of this idea well in advance. We appreciate the engagement of the UN Secretary General, who has taken a very strong stance in support of peace, in support of the UN Charter. ये कह रहे हैं कि जो यूएन चार्टर है पीस चार्टर, उसको फॉलो किया जाए और यहाँ पे रशिया जो है अपना हाई हैंडेडनेस ख़त्म करे, Level of the threat बंद to करे. global security has been equated to that of the Second World War, or even higher, following Putin's order to put an alert Russian nuclear forces. What a madness! If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945. The Security Council addressed the issue of the Russian war against Ukraine, and the decision was not adopted due to the obvious reason. The country attempting to occupy Ukraine since 2014 has occupied the seat of the Council permanent member since 1991. Therefore, we do not accept the Russian logic that the Security Council was unable to act due to one-sided and unbalanced approach. The only guilty party is the Russian Federation. Distinguished delegates, Russia uses all its military potential to attack Ukraine and has begun redeploying reserve units on the border with Ukraine. It fires cruise and ballistic missiles at cities, attacks with aviation tanks, इनका कहना है कि रशिया अभी and reconnaissance क्रूज मिसाइल और टैंक्स which mark यूक्रेन में residential buildings in भेज रहे हैं for the air attacks. और बहुत एक लार्ज स्केल पे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है यूक्रेन में. Destroying the infrastructure objects. इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. The waste disposal site near Kiev, the fuel base in the town of Vasilkiv, that is effectively Kiev's ये अभी यूएन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. Such towns as Shester and Stanitsa Luganska near Lugansk are now nearly destroyed, as well as residential buildings in and around Kiev and Kharkiv. The Russian forces seized the Chernobyl nuclear power station at the part of southern Kherson region, including the North Crimean Canal. Due to the active moving of Russian heavy militaries through the Chernobyl exclusion zone, the radiation level has increased rapidly. In the Black Sea, Russian warships deliberately attacked two civil vessels under the flags of Panama and Moldova, approaching Ukraine. This constitutes a flagrant violation of the international law of the sea. Incredibly, one of the vessels had the Russian crew. Still, it was attacked by the Russians. Russians keep attacking kindergartens and orphanages, thus committing war crimes and violating the Rome Statute.
आप देख रहे हैं वहाँ पे रशियन फेडरेशन भी है, जो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस असेंबली में मौजूद हैं। तो देखते हैं इसमें क्या ट्रांसफर होगा और क्या इसमें जो एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, क्या उससे कोई हेल्प मिल सकता है इस वॉर को स्टॉप करने में। region, Russian tanks shot down a bus with civilians. Later, the Russian military did not allow ambulances on the spot. As of today, 352 people, including 16 children, were killed on the Ukrainian side, and 2,040 Ukrainians, including 45 children, wounded. ये कह रहे हैं अराउंड 350 यूक्रेनियंस अभी तक मारे जा चुके हैं एंड अराउंड 2000 लोग जख्मी हो चुके हैं इस वॉर में। Morning shellings in Kharkiv, and we cannot really estimate at this moment how many were killed. तो होप सब कर रहे हैं कि ये वॉर जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए और जो भी डिफरेंसेस हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वो डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। The aggressor forces have already lost more than 5,000 in manpower during the first days of aggression. Excellencies, the General Assembly should be vocal in demanding from the Russian Federation to stop its offensive against Ukraine. In recognizing Russian actions as an act of aggression against a sovereign and independent state, in demanding from Russia to immediately, completely and unconditionally withdraw ये its कह रहे हैं कि रशिया को इस असेंबली में के थ्रू internationally recognized इनको borders. ये In demanding from the Russian Federation to reverse the decision related to the कहना चाहिए कि ये terrorist अपना जो एग्रेशन है इसको जल्द अज जल्द स्टॉप करे full compliance with the provisions of international humanitarian और law. जो भी इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उनको उनकी रेस्पेक्ट करे, And is उनको involvement फॉलो in करे aggression of the Russian Federation against और रशिया पे प्रेशर डालें जो भी मेंबर्स हैं यूएन मेंबर्स हैं। What is happening now in Ukraine has already had the security and humanitarian implications for all of you. Immediately for Europe, a bit later for the rest, including in terms of food security, energy security, financial markets, collapse of the economies. Last September, my president said, while delivering his statement at the high-level segment of the 76th session of the General Assembly, and I quote, "I understand that criticism of the UN is often heard, but we criticize ourselves." End quote. If we fail to respond now, we will face much more than criticism. We will face oblivion. It must not happen. Now it is time to act, time to help Ukraine, that is paying now the ultimate price for freedom and security of itself and of the world. If Ukraine does not survive, international peace will not survive. अगर यूक्रेन यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया तो यहाँ पे इंटरनेशनल पीस को ख़तरा है। ऐसा यहाँ पे यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव यूएन जनरल असेंबली जो इमरजेंसी मीटिंग है इसमें कह रहे हैं। Now we can save Ukraine, save the United Nations, save democracy, सेव यूनाइटेड नेशंस, सेव डेमोक्रेसी, सेव यूक्रेन। and that Ukrainians are fighting for and paying with their lives. The Russian delegate will speak shortly. अभी रशिया के जो डेलीगेट्स हैं, जो मेंबर इसमें आए हैं रशिया से, वो भी यहाँ पे जनरल असेंबली में बोलने वाले हैं। लेट्स सी उनका क्या कहना है। In the United Nations. तो शायद हमें कोई क्लू मिले कि रशिया आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, ये यूक्रेन पे क्यों आखिर हमला कर रहा है, In the United अनप्रोवोक्ड हमला। has ever been legitimate.
I wonder if ever this assembly voted in accordance with paragraph 2 of Article 4 on admission of the Russian Federation to the United Nations, either in December 1991 or in January 1992, or wherever thereafter. I want to ask the delegates whose countries voted for admission of the Russian delegation to the United Nations to raise their hand to confirm that Russia was admitted to the United Nations according to the Charter. Please, gentlemen, ladies and gentlemen, please raise your hand if your country voted in the formal session of the General Assembly in reply to the letter by President Yeltsin dated December 24, 1991, when he told the United Nations that Russia would like to be a continuator state of the demised Soviet Union. Anyone? Shall I put my glasses if my vision fails me and I don't see any hand raised? Any country? Anyone voted for Russian membership? I leave you with that and think about it when you listen to the Russian delegate. अभी रशिया के डेलीगेट आ रहे हैं बोलने के लिए इस इमरजेंसी मीटिंग में, तो देखते हैं उनका क्या कहना होगा इसके बारे में कि आखिर रशिया ने क्यों ऐसा स्टेप उठाया, कि डेंजरस स्टेप हो सकता है, क्योंकि अभी जो न्यूक्लियर अटैक के बारे में जो बात की जा रही है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अभी रशिया के जो डेलीगेट है वो अभी आ रहे हैं स्टेज पे, तो लेट्स सी क्या यहाँ पे ये कहने वाले हैं, क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये देंगे रशियन जो ऑफेंसिव है यूक्रेन में। रशिया के जो डेलीगेट है, I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. रशियन फेडरेशन के जो डेलीगेट है अभी स्टेज पे आ रहे हैं। बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। देखते हैं रशिया का एक्चुअल में Mr. President, ये रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हो रहा है in recent days, वो भी Ukrainian issue has उसके थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। headlines, global headlines, and has now been given pride of place at the UN Security Council and now the General Assembly. At the same time, Russian actions are being distorted and thwarted, and there is the number of incredible fakes is staggering. With the ये कह रहे हैं कि रशिया का जो ये स्टेप है पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना रहा है। these lies. For this reason, today I wish to focus on the real reasons for the crisis that has emerged and its possible consequences. I wish to सोशल मीडिया और जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर रशिया के ऑफेंसिव की हेडलाइंस अभी पूरे दुनिया में बन रही है। तो लेट्स सी इनका क्या कहना होगा इसके रशिया का जो ऑफेंसिव है इसको कैसे डिफेंड करेंगे। रशियन डेलीगेट जो अभी बोल रहे हैं, जो अभी यूएन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, necessary was direct dialogue as set out in the document between Donetsk and Lugansk. However, the latest confirmation from the senior leadership of the country was that Ukraine is unwilling to engage in this dialogue. इनका कहना है कि 2015 में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि पीसफुल वे में अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा करने से मना कर दिया। Persuaded us of the fact that we no longer have a right. और जो ये मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में जो साइन हुआ है, Insofar as Ukrainian इनका कहना है, जो रशियन डेलीगेट है इनका कहना है कि यूक्रेन ने इसको वायलेट किया। escalated, the leadership of DPR and LPR turned to us with a request to deliver
recognition, the recognition, and this was a logical step to the persistent aggressive actions undertaken by the Ukrainian regime, the Ukrainian authorities, which has of late been actively armed and incited by a number of states, were under the misconception that with the indulgence of Western's patrons and sponsors. इनका कहना है कि जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, जो यूएस और नेटो का की जो बात की जा रही है कि यूक्रेन नेटो के साइड इनके इनके साइड नेटो ज्वाइन करने जा रहा है था, और जो यूएस का इन्फ्लुएंस यूक्रेन में ज़्यादा बढ़ रहा था, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को क्योंकि वो रशियन सोवरेनिटी पर ये बोल रहे हैं कि एक अटैक था, तो इसके रिटाइलेशन में जो रशिया ने यूक्रेन में अभी जो वॉर स्टार्ट किया है, तो ये ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्शन को, जो रशिया अभी यूक्रेन में अपना जो कंट्रोल है, अपना ऑफेंसिव जारी रखे हुए हैं, तो उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे रशियन डेलीगेट। Given the lack of prospects for addressing the problems in the area under the Minsk operations due to failure to fulfill them, the Russian president took a decision for a special military operation to be carried out of the Donbass occupation of Ukraine is not part of these plans. The goal of the special operation is to protect the people who for 8 years were subject to torment and genocide by the Kiev regime. To that end, there's a need to demilitarize and denazify Ukraine. ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ है, इन्होंने जो रशियन जो यूक्रेन में लोग हैं उनका जेनोसाइड किया, उन पर जुल्म किया, तो इसके रिटेलिएशन में रशिया जो है अभी यूक्रेन में हमला किया है, ताकि ऐसे जो फोर्सेस हैं जो यूक्रेन में रशियन सिंपैथसाइजर्स को अटैक कर रहे हैं, उनको उनका जेनोसाइड कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए रशिया ये कदम उठा रहा है। Представляющих из различных рас, вероисповеданий и цветокожих есть народ, проживающих End of quote. Today's government of Ukraine is no such government. Moreover, during the special military operation, Russia has been exercising its इनका कहना है कि जो अभी की यूक्रेनियन गवर्नमेंट है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करती है, वो लोगों को रेस के बिना पे परसिक्यूट कर रही है। तो इस वजह से जो रशिया है यूक्रेन में जो अभी अपना ऑफेंसिव चला रहा है, ये कह रहे हैं कि इस वजह से जो यूक्रेनियन रजीम है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में अभी वहाँ पे जो डिफरेंट रेसेस है ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन में, ईस्ट यूक्रेन में जो लोग हैं वो रशियन सिंपैथसाइजर्स है मोस्टली, और जो वेस्ट में है वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं वो जो है वेस्ट की तरफ उनका इंक्लिनेशन है। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे जो रशियन डेलीगेट है, ये इनका कहना है कि रशिया अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी था। Are not being complied with the Russian Federation, which I should like to recall and emphasize the Russian Federation is not a party to it. Moreover, our Western colleagues have shamelessly inundated the country with weapons, have sent to the country instructors and effectively incited Ukrainians who are facing a 120,000 strong military contingent prompted them to engage in armed provocation against the Donbass. Thereby, the Western countries
created a bubble that cannot but pop. Distinguished colleagues, discussing today, this discussion, it behooves us to note that back in 2008, the Russian president at the NATO Bucharest Council cautioned that members of NATO should think 3 times before proudly stating that Ukraine and Georgia will join NATO, and this was met. This was ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को 5 दफ़ा सोचना चाहिए इससे पहले कि वो ये सोचे कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे। तो इनका ये कहना है कि जो अभी रशिया वॉर जैसी सिचुएशन जो यूक्रेन में क्रिएट किया, अपने जो सोल्जर्स वहाँ पे भेजे हैं, टैंक्स भेजे हैं, अपना जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो अलर्ट किया है, इसी वजह से क्योंकि जो यूक्रेन है वो नेटो की तरफ आगे बढ़ रहा था। जो वेस्ट का एक मिलिट्री अलायंस है उसमें जो रजिस्टर होने जा रहा था, उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने अपना जो है ऑफेंसिव चलाया है। और इनका यही जस्टिफिकेशन है कि यूक्रेन पर रशिया का हमला इसलिए हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है कि जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, क्या उनको अपना ये राइट नहीं है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना जो है अलाइन हो सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल जो अभी जो पॉलिटिक्स है उसमें ये एक बड़ा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो सोरेनिटी जो है हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, क्या एक छोटी कंट्री अपने लिए कुछ भी अपने दम पे डिसाइड नहीं कर सकती है? क्या एक बड़ी कंट्री हमेशा मतलब ये डिसाइड करे, ये डिक्टेट करे कि छोटी जो कंट्री है उसके नाइबरहुड में उनको कैसे अपना फॉरेन पॉलिसी शेप करनी है? तो रशियन डेलीगेट यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं यूएन जनरल असेंबली के, उनको यहाँ पे एक पीस प्रोसेस चलाना चाहिए और जो भी वेस्टर्न इंटरफेरेंस है यूक्रेन में उसको स्टॉप किया जाए। Remotely balanced, then they would not have left out issues that need to be addressed in the context of the Ukrainian issue. Specifically, what was unaddressed was the way that the unconstitutional coup in Ukraine, in Kiev, in February 2014, resulted in the Maidan junta seizing power and using it against the residents, shelling civilian areas with artillery pieces and multiple rocket launchers, and raining bombs on the people of Donbass and Lugansk. What was unaddressed was how the Ukrainian authorities, with the tolerance and indulgence of Western sponsors, consistently and cynically shirked their obligations to implement the Minsk agreement. आप देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न इंटरफेरेंस है यूक्रेन में, उससे जो रशिया है वो डरा हुआ है कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था, जो ये कह रहे हैं उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि उनकी जो नेशनल सॉवरेनिटी है उस पे ख़तरा ये महसूस कर रहे थे। इसी वजह से इन्होंने जो एक ऑल आउट ऑफेंसिव चलाया है, जो भी यूक्रेनियन जो मिलिट्री बेसिस है उनको ऑलमोस्ट जो है सीज़ किया है, और यहाँ पे मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन में उसको बहुत हद तक डिस्ट्रक्ट किया है अभी तक रशिया ने।
The slaughter on Independence Square was a provocation by the leaders of Maidan. They specifically last year held an informal Security Council, our informal meeting on this issue in order to provide colleagues of the Security Council with more information about this. However, in response on this, असम्बली में अभी यूक्रेन के भी जो डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मौजूद हैं। cliches about Russian propaganda. What kind of a text ये message? एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है यूएन जनरल असम्बली की, अभी यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। Have a frank assessment of the role in inflating और जो अभी बोल रहे हैं ये रशियन डेलीगेट है, or ये अपना एक्शन जो है इसमें यूक्रेन में अपना इसको डिफेंड कर रहे हैं। carte blanche to carry out any actions or steps that would be unthinkable for any civilized state. With tales being spun about the triumph of democracy in Ukraine, the Maidan authorities and nationalists engaged in, with impunity, murdering political opponents, persecuting opposition, shuttering opposition television outlets, where there could be some relatively objective information provided. 6 of those television channels were shuttered under Zelensky alone. And how could we fail to mention the fact that the country was flooded with weapons, which were then turned on peaceful civilians in Donbass? The responsibility for what is taking place right now lies at the feet of the current Ukrainian leadership as well as our Western colleagues. Today, we wish to emphasize that this has been inflated by the lies, deceit, misinformation from the Ukrainian armed forces and the nationalist Western media outlets increasingly, shamelessly are portraying our military operation as a रशियन डेलीगेट कह रहे हैं कि जो रशियन जो मीडिया लाइज और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, cities, हम hospitals, सिविलियन एरियाज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं। not pose a threat to the civilians of तो Ukraine. इनका बड़ा स्टेटमेंट आया है रशियन डेलीगेट का कि जो यूक्रेनियन मीडिया है Forces have taken और जो आर्मड जो इनका जो सोशल मीडिया जो इनका चल रहा है रशियन मिलिट्री का, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। orders being upheld. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम सिविलियन एरियाज़ को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। Controlled by Russian representatives and the special Ukrainian police who are present in the area. The Chernobyl plant is also operating normally. The threat to the residents of Ukraine presently is posed by the Ukrainian nationalists who have effectively taken hostage the residents of Ukraine, and they're using them. They're hiding themselves behind them and using them as human shields. There's रशियन डेलीगेट अभी यूएन जनरल असम्बली इमरजेंसी मीटिंग में एड्रेस कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो वेस्टर्न इंटरफेरेंस है यूक्रेनियन पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से इन्होंने ये अटैक किया है यूक्रेन पे। अब जस्टिफाई कर रहे हैं अपने इस एक्शन को। lies at the feet of the Maidan regime. The residents of Ukraine are also threatened by the unfettered, uncontrolled radical elements giving to all those who wish, including criminals who have specifically been released from prison. They are now receiving weapons, and the looters and marauders and criminals are now using them to target civilians. There is sufficient and abundant evidence of this from residents of Kiev and other cities. This demonstrates the recklessness of Ukraine authorities vis-a-vis their women. Just now, we received a letter from the Ukrainian human rights civic organizations, the Social Policy and Social Protection Institute, under the name of Nina Berezhna. For 8 years, this body has been informing international structures about how the neo-Nazism was born and proliferated in Ukraine and how it has been and continues to be upheld in the state level. I briefly quote today. The apogee of the recklessness and lawlessness of neo-Nazis in Ukraine was that condemned criminals have been released from prison. They have carried out grave crimes, murders, etc. Only Kiev, those who are जो willing to receive एक्यूज़ कर रहे हैं कि जो रशिया जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ हैं वो मर्डर्स कर रहे हैं, वो जो है रशियन सिंपैथाइज़र जो यूक्रेन में है उनका जेनोसाइड हो रहा है यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ की जानिब से। तो इस वजह से जो रशिया है ये मजबूर हो गया है यूक्रेन पर जो इसने वॉर डिक्लेयर किया है। president following the unconstitutional coup in February 2014, Turchynov
all citizens who are not indifferent to slaughter Russians throughout the territory of the country. And this, despite the fact that the most recent document for Ukraine in 2019 sets out that 16, almost 17%, and actually far more people are Russian there. Now, against the Russian Federation, in social networks, an information war has been unleashed insofar as evidence of destruction of civilian infrastructure by the Russian military does not exist. Ukrainian attacks and accidental attacks will bear out the fact that Ukrainian कोई एविडेंस नहीं है यूक्रेन में जो ये कह रहे हैं सिविलियंस पे अटैक हुआ है, सिविलियंस किए गए हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट किया गया है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इनका कहना है जो रशियन अभी डेलीगेट बोल रहे हैं यूएन जनरल असेंबली में, तो इनका कहना है कि ये सारे फेक और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है यूक्रेन के मिलिट्री जो कंट्रोल्ड मीडिया है। Of international peace and security, and at the same time, there was not even a hint at an attempt to find a constructive solution at the Security Council, attempts to circumvent the position of the Russian Federation, to disregard the position of the Russian Federation, runs counter to the very bedrock of the United Nations. ये सारे जो लाइज और मिस इन्फॉर्मेशन है ये रशियन फेडरेशन को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। जो रशियन डेलीगेट अभी यूएन जनरल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग में बोल रहे हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं कि कैसे ये अपने जो इस अटैक को डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रशिया ने कोई हॉस्टिलिटी स्टार्ट नहीं किया है, जो भी किया है यूक्रेन ने स्टार्ट किया है। और अपना जो स्पीच है इन्होंने ख़त्म किया है, एक लंबा स्पीच दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने 3 चीज़ें इसमें कही कि जो यूक्रेन ने मिन्स्क जो 2015 का एग्रीमेंट है उसको वायलेट किया, जो इनका बायलेटरल आपस में जो हुआ था एग्रीमेंट के थ्रू कि हम जो भी इश्यूज़ हैं उनको बायलेटरली रिजॉल्व करेंगे, उसका वायलेशन हुआ। अब यूक्रेन आगे बढ़ के नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे, तो वो एक दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है कि जो वेस्टर्न खासकर यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो यूक्रेन में बढ़ता जा रहा था, और जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो यूक्रेन में प्रो रशियंस है उनको परसिक्यूट किया है, उनका जेनोसाइड इसके मुताबिक हो रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पे अपना वॉर डिक्लेयर किया है। North Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland, Norway, Republic of Moldova, Georgia, San Marino, Andorra, Monaco and Liechtenstein align themselves with this statement. Mr. President, I want to thank you for convening us here today, and for the Secretary General to be here, and for all of you colleagues being here. It's very important that the facts are heard and fully understood, and that this body is able to take the appropriate decisions after the fact that the Security Council, thanks to the veto by one country alone, stopped this council from taking that decision. Let me start by expressing the European Union's full solidarity and support to Ukraine and its people. ये यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट अभी बोल रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा एक्सटेंड किया है सपोर्ट यूक्रेन को। On behalf of European Union, the situation has dramatically escalated, despite tireless diplomatic efforts, including at the highest level. Russia has decided to turn its back to peace, to the rules-based international order as defined inter alia in the UN Charter,
to diplomacy and to the international community. इनका कहना है कि रशिया ने सारे जो यूएन के चार्टर्स हैं, पीस चार्टर्स, उनको वायलेट किया है Injured, internally displaced and refugees. और रेफ्यूजी क्राइसिस इन्होंने यहाँ पे इंड्यूस किया है यूक्रेन में Forces of the Russian Federation in violation of Ukraine's independence, sovereignty and यूक्रेन की जो इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी पर अटैक किया है रशिया ने in this aggression against Ukraine. And we call on both Russia and Belarus to abide by their international obligations. We're also alarmed by Russia's racing इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस जो है पीस ट्रीटीज हैं उनको यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट alert level of its nuclear arsenal and to avoid any actions that could risk the safety or security of the nuclear power plants in Ukraine, a non-nuclear weapon state under the Nuclear Non-Proliferation. न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट Resulting destruction and loss of life. कह रहे हैं Demand from Russia to cease its military operations immediately and unconditionally मिलिट्री ऑपरेशंस को सीज करना चाहिए यहाँ पे रशिया को entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. We further call on Russia to engage in earnest in dialogue with a view to political and diplomatic एक solution. डायलॉग के थ्रू पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनके बीच में ऐसा कह रहे हैं Helsinki Final Act, as well as Russia's specific commitments to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity under the Budapest Memorandum of 1994. This is arguably the biggest aggression in Europe. बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 इन्वोक कर रहे हैं जिसके तहत जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएन की उनको जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेनिटी को उनकी इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट करने की बात कही गई है Monitoring the situation in the region. This assembly has the responsibility immediately and effectively to acknowledge and address Russia's actions. Failing to do so will erode trust to the rules रशिया को यहाँ पे मोर रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए इनका कहना है to perpetrators of such aggression and aggravate similar risks to other UN member states in the region and beyond. We stand firmly by Ukraine and its people. We deplore the loss of life and human suffering. This is a dire humanitarian catastrophe. अपना पूरा सपोर्ट यूक्रेन को एक्सटेंड किया है With the toll of IDPs and refugees rising, कह रहे हैं कि जो ह्यूमन यहाँ पे जो कैटास्ट्रोफ रशिया ने इंड्यूस किया है रेफ्यूजी क्राइसिस हुई है member states are providing इस चीज़ को इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए population. Ukraine has activated the Union's civil protection mechanism and is receiving urgently needed supplies from EU member states. In addition, the Republic of Moldova यूरोपियन यूनियन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहा है यूक्रेन में in dealing with the human catastrophe caused deliberately by the Russian Federation's invasion of Ukraine. रशियन फेडरेशन का जो इन्वेजन है यूक्रेन में Armed formations to respect उसकी वजह से ये सारी रेफ्यूजी और civilians and civilian infrastructures. रेफ्यूजी क्राइसिस जो हुई है Access should be secured. उसको एड्रेस करना चाहिए Russia-backed armed formations to allow safe and unhindered humanitarian access and stop their disinformation campaign and cyber attacks. We strongly condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine and call on it साइबर अटैक्स को स्टॉप करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं जो रशियन साइबर अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन में sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, and we call on all UN members not to recognize the two self-proclaimed separatist entities. कह रहे हैं कि जो यूक्रेन में जो दो सेपरेटिस्ट एंटिटीज जो कह रहे हैं कि उनका इंडिपेंडेंस जो पुतिन ने अभी अनाउंस किया था कि उसको रिकॉग्नाइज ना करें क्योंकि ऐसा करने से यूक्रेन का जो सॉवरेनिटी है जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो वायलेट हो जाती है और ये बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है 1994 जो यूएन ने अडॉप्ट किया था उसके खिलाफ है The threat and the use of force against the territorial integrity or political independence of any state पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है यूक्रेन का वो वायलेट हो रहा है ऐसा करने से should be resolved through dialogue and diplomacy.
इन्होंने भी डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की है कि जो भी डिफरेंसेस हैं इन दोनों मुल्कों के बीच में, डायलॉग और डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू उसको रिजॉल्व करना चाहिए। these efforts and instead opted unilaterally for a grave and premeditated escalation. और ये रशिया की यूनिलेटरल एग्रेशन को यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेट है We are today at a crucial इसको moment. Too many कंडेम times कर in रहे the हैं। past, the international community has been blind or too slow in front of unfolding tragedies. Entire generations in many places around the world, many of you representing them, have paid and are still paying the price of inaction. We cannot make the same mistake again. We have to take action. ये कह रहे हैं कि चुप नहीं रहना चाहिए, जो भी बाकी कंट्रीज़ हैं नाइबरिंग, जो भी बड़े बड़े पावर्स हैं, उनको इस इशू पे चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज इस वक्त ये चुप रहेंगे तो आने वाले वक्त में रशिया और भी मिस एडवेंचर्स अंजाम दे सकता है। In particular, any action that places the safety and security of Ukraine's nuclear and radioactive waste installations at risk. The people of Ukraine and the whole world are watching us and counting on us, and will judge us on the decisions that we will take here in this special emergency session. दुनिया के लोग और यूक्रेन के लोगों की नज़रें अभी हम सब पे हैं, ऐसा कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट। This assembly will massively support the resolution tabled by Ukraine and its partners. The EU and its member states will continue to do their utmost to protect the integrity of the rules-based international system, which is key to our collective security, and we call on all UN member states to do the same. On our side, we will continue to stand by Ukraine, support its democratically elected institutions and representatives and its people, including through additional political, financial, humanitarian and logistical support. I thank you very much. अपना पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को। Representative of the European Union. यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव अभी जा रहे हैं अपना स्पीच ख़त्म करके। इन्होंने भी यही बात कही कि रशिया को अपना जो भी डिफरेंसेस हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, उनको थ्रू डायलॉग सॉल्व करना चाहिए, एंड वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने अपना पूरा जो सपोर्ट है यूक्रेन के I now give the floor to the distinguished क्योंकि यूक्रेन को अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है। Baltic countries. अभी डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं यूएन जनरल असेंबली की जो अभी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden, and my own country, Denmark. Mr. President, on the night of 24th February, the Russian leadership decided to attack Ukraine. डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव अभी आ रहे हैं स्टेज पे। Possible the invasion of Ukraine by the Russian Federation. People around the world are watching with horror the tragedy unfolding in Ukraine. A member state of this organization, a member of this community of nations. We are struck with a profound sense of injustice and a profound sympathy with the Ukrainian people who are fighting for their country, their cities, their homes, their families. इनजस्टिस हो रही है यूक्रेन के लोगों के साथ, इनका जो इनके घरों पे जो हमला हो रहा है अभी रशिया की तरफ से, Armed attack. उसको कंडेम कर रहे हैं। अभी डेनमार्क के जो अभी रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आए हैं यूएन जनरल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग में, Actions gravely violate international law and इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है अभी रशियन जो एग्रेशन है। attack on this organization. इनका भी यही कहना है कि जो यूएन चार्टर है, जो पीस चार्टर है, उसको भी यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट किया है रशिया ने, This cannot stand. और ऐसा हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, Russia counted on इनका the कहना world है। to remain silent, but we are acting. And on this day, और हम चुप नहीं बैठेंगे। until peace prevails and every Ukrainian can safely return to their homes, we stand with Ukraine. वी स्टैंड विद यूक्रेन, ऐसा इनका कहना है। This aggression, not only for Europe but globally, cannot be overstated. तो आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे डेलीगेशंस आ रहे हैं जिस भी कंट्री के, उनका जो फुल सपोर्ट है
वो यूक्रेन को जा रहा है। इन सब का कहना है कि जो भी डिफरेंसेस है यूक्रेन और रशिया को लग रहा है कि कोई इशू है, उसको एक डायलॉग के थ्रू सोल्व करना चाहिए, रादर देन रिजॉर्टिंग टू यूनिलेटरल एग्रेशन। तो इस बात को यहाँ पे पूरा to the civilian population. कॉन्डम किया जा रहा है हर एक मेंबर की तरफ We से। will continue to look at every single instrument in our toolbox as a matter of urgency. Sanctions have already been enacted to cripple Putin's ability to finance his war machine. फाइनेंशियल सैंक्शंस की बात किया है इन्होंने Lukashenko regime in Belarus in enabling कि the attack पुतिन on गवर्नमेंट Ukraine पे also demands a firm response. अदर कंट्रीज़ के जो हैं जो वो सैंक्शंस लगाएं, ताकि इनकी जो इकॉनमी है, इनके जो फाइनेंसेस है वो लॉस में आ जाए, ताकि जो पुतिन है वो अपनी इस हरकत को Every nation बंद कर must look सके। at how to further support Ukraine. और ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री असिस्टेंस यहाँ पे ये मांग रहे हैं कि यूक्रेन को दिया जाए। Families separated, children sheltering in the safety of the Kiev subway system, kindergartens destroyed by Russian ordnances. ये कह रहे हैं कि किंडरगार्टन्स तक को यहाँ पे रशिया ने नहीं बख्शा है, Center of the capital. इनको डिस्ट्रॉय किया है, स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे हमला किया है। Indiscriminate attacks on civilians in this unlawful and immoral war of conquest that serves no purpose and no principle but the naked quest for power and territory. This cannot stand. Russia अनलॉफुल जो यहाँ पे यूनिलेटरल एक्शन रशिया का है, उसको यहाँ पे उसकी मजम्मत की जा रही है। must be guaranteed. Civilians must be protected. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की बात हो रही है कि इनको And we इनकी echo the रिस्पेक्ट plea of होनी the चाहिए। Secretary General. We demand an immediate ceasefire and we urge Russia इन्होंने डिमांड किया है, जो डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव भी बोल रहे हैं कि वी डिमांड एन इमीडिएट सीज फायर, and negotiation. और जो भी डिफरेंसेस है उनको नेगोशिएशंस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जाना चाहिए। War crime will be recorded and we will ensure that the perpetrators और of सिविलियंस जो crime सिविलियन are किलिंग्स, held accountable. इनको फौरी तौर पर स्टॉप किया जाना चाहिए। History has its eyes on us. Every legal avenue available will be used to hold the aggressor to account. और रशिया को यहाँ पे अकाउंटेबल होल्ड करने की बात कर रहे हैं। Russia's erroneous and absurd allegations of genocide in Ukraine, which the Russian Federation has cynically used as a false pretext for its invasion. अभी जो रशियन डेलीगेट ने बात की थी कि जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है वो लोगों का जेनोसाइड कर रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे रिफ्यूट किया है डेनमार्क के डेलीगेट ने। ये कह रहे हैं कि रशिया झूठ बोल रहा है कि यहाँ पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट वॉर क्राइम्स जो हैं यहाँ पे कर रही है। ये एक झूठ शील्ड यूज़ कर रहा है ताकि अपने जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए रशिया ऐसा कह रहा है। Was put in place drawing from the horrible lessons of two world wars, promising one another that future generations would be saved from the scourge. वर्ल्ड जो फॉर्मर वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। जो डेनमार्क के अभी रिप्रेजेंटेटिव यूएन जनरल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग में इनका जो कहना है, This cannot stand. The matter is now in the hands of the General Assembly, where one veto cannot overrule the UN membership. where the इनका भी कहना है कि जो यूएन चार्टर है, पीस चार्टर है, उसको यहाँ पे इन्वोक किया है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। responsibility for is completely unacceptable. और रशिया का जो एग्रेशन है, यूनिलेटरल एग्रेशन, उसका जो यहाँ पे ये Maintaining peace and security मजम्मत कर रहे हैं। violate the very principles of the UN Charter. The latest meetings of the Council demonstrated the need for reform. It demonstrated who had the firmness and valor to defend the UN Charter. No country can grow and thrive in isolation. Russia knows this. The General Assembly has the power to send a firm message to Putin. And what we say ये कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री आइसोलेटेड अकेले तरक्की नहीं कर सकती है। ये आज ग्लोबल जो वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, हर एक कंट्री अदर कंट्री पे डिपेंडेंट है, हर एक स्फीयर में। तो रशिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अदर कंट्रीज अगर इनके साथ जो भी टाइज हैं उनको ख़त्म करे तो उससे रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यूएन को ये पावर है कि वो रशिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर सकता है। equipped to deal with similar crises and
crimes in the future, wherever, on whichever continent they occur. Over the last week, we have heard powerful statements from representatives of every continent on this planet, from Africa to Asia, from Europe to the Americas, that Russia's behavior towards a fellow member of the United Nations cannot stand. And we will hear more today. And to those who still refer to two parties to a conflict, we echo the words of a protester who had written on her sign, "If Russia stops fighting, there will be no more war. If Ukrainians stop fighting, there will be no more Ukraine." That is the simple reality before us. That is the simple truth. इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इफ रशिया स्टॉप्स फाइटिंग देयर विल बी नो मोर वॉर एंड इफ यूक्रेन स्टॉप्स फाइटिंग देयर विल बी नो मोर यूक्रेन। इनका कहना है कि यूक्रेन को ये राइट है कि वो अपने जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करे, तो रशिया को यहाँ पे बंद करना चाहिए अपना जो एग्रेशन है। इन्होंने अपना स्पीच ख़त्म किया। जो डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव थे, I now give the floor to the distinguished representative of France. अब फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं स्टेज पर, देखते हैं। ये फ्रेंच में बात कर रहे हैं तो समझना मुश्किल है। अब हम इसकी जो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उससे समझने की कोशिश करेंगे। Rhétorique dangereuse qui alimente davantage les tensions. La Russie conduit cette agression armée en violation des principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies, que tous les membres de cette Assemblée sont dans l'obligation de respecter. Vendredi, elle s'est opposée seule à une résolution du Conseil de sécurité co-parrainée par 82 États. L'Assemblée générale porte aujourd'hui une responsabilité ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो चार्टर है उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, qui, sur tous les continents, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह रशिया को यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। le retrait de l'armée और जो हिस्टोरिक जो वॉर्स हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है दुनिया को। au sein de cette Assemblée, préparer une résolution demandant à la Russie de mettre un terme à l'agression et de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle appelle tous les États membres de cette Assemblée à voter ce texte. Au-delà de l'Ukraine, il s'agit de défendre la charte et la raison d'être des Nations Unies. Soyons clairs. ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को रजिस्टर करने का पूरा हक है और जो रशिया है उसको फौरी तौर पर अपना एग्रेशन रोकने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि सारे जो डेलीगेट्स हैं अदर कंट्रीज़ के, हमने डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव को अभी सुना, अभी रशियन जो ये अभी फ्रेंच डेलीगेट जो कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल चार्टर्स हैं, पीस चार्टर्स हैं, उनको इन्वोक कर रहे हैं कि उनका रिस्पेक्ट किया जाए। जो भी बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसमें जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने की बात की गई है, उस कन्वेंशन को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो डेलीगेट्स हैं रशियन एग्रेशन को स्टॉप करने की जो बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर रशिया वॉर स्टॉप करेगा, लड़ना स्टॉप करेगा, तो ये वॉर ख़त्म होगा और कोई वॉर नहीं होगा। लेकिन अगर यूक्रेन वॉर स्टॉप करेगा तो यूक्रेन ही ख़त्म होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन को निगल जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सब बात कर रहे हैं कि यूक्रेन को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है और रशिया को अपना जो एग्रेशन है वो बंद करना चाहिए। अभी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इमरजेंसी इजलास चल रहा है, फ्रेंच डेलीगेट अभी स्टेज पर है। Monsieur le Président, la France
salue le courage dont fait preuve le peuple d'Ukraine. Nous appelons cette Assemblée à lui exprimer sans tarder son soutien par l'adoption d'une résolution. Je vous remercie. फ्रेंच डेलीगेट ने अपनी बात ख़त्म की है. इन्होंने भी अपना सपोर्ट यूक्रेन को एक्सटेंड किया है. इमरजेंसी कन्वेंशन अभी यूएन जनरल असेंबली का चल रहा है. यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी टेंस सिचुएशन बनी हुई है. अभी न्यूज़ में आया था कि रशिया और यूनाइटेड किंगडम यूके का भी आ रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव, वो स्टेज पर आ रहे हैं. Mr. Secretary General, Mr. President, colleagues. On Friday, 81 member states supported a resolution in the Security Council to stop the war in Ukraine. 81 कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन पे साइन किया है. ये कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इस वॉर को स्टॉप किया जाए. We gather in the General Assembly to stand against Russia's illegal attack on Ukraine. बड़ा स्टेटमेंट है कि ये रशिया के अगेंस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको स्टॉप करना चाहिए अपना एग्रेशन. और जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर हैं उनको इन्वो किया है. इन्होंने भी किया है कि यूएन का जो चार्टर है, पीस चार्टर, उसको उसका रिस्पेक्ट किया जाए. रशिया उसको वायलेट कर रहे हैं यहाँ पे. और जो रशियन मिसाइल्स और जो टैंक्स है अभी यूक्रेन में, इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट वहाँ पे ऑफेंसिव किया है. उसका कंडेमनेशन यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम कर रहा है. इनका कहना है For their country, for their continued future as a free and independent nation. यूक्रेन एक फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन है और इसकी इंटीग्रिटी को रशिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए. Babies born in air raid shelters. कह रहे हैं कि जो वॉर कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो ह्यूमन जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिफ्यूजीज क्राइसिस एज ए रिजल्ट हो जाएंगे, उस सब का अंदाज़ा शायद रशिया को नहीं है, या वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है. 7 million Ukrainians are displaced. 7 मिलियन यूक्रेनियंस यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए हैं, ऐसा इनका कहना है. That our United Nations was created to prevent has been unleashed. और इनका कहना इम्पोर्टेंट बात की है कि यूनाइटेड नेशंस को वॉर रोकने के लिए बनाया गया है. तो हम सबको रशिया को ये एक मैसेज सेंड करना चाहिए कि वो ऐसा यूनिलेटरल एक्शन आज 21st सेंचुरी में ये बहुत ही एक गलत बात है. ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया की मीडिया, दुनिया की नज़रें आप पर है. The safety of every nation's borders and independence are at risk. तो इनका कहना है कि रशिया को अभी इस एग्रेशन से रोकना चाहिए ताकि जो अदर कंट्रीज़ है, ताकि उनकी इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को यहाँ पे सेफ गार्ड किया जाए. अगर ऐसा ना किया जाए अभी, तो रशिया आने वाले वक्त में और भी जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है उन पर ऐसे ही मिस्चीवियस अटैक्स कर सकता है. With the principles of the Charter of the United Nations. चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात बार बार कर रहे हैं सारे मेंबर्स, Is peace. और जिसका मतलब ये कह रहे हैं द मीनिंग ऑफ यूएन चार्टर इज पीस. We offer our unequivocal support for Ukraine and the Ukrainian people. अनकंडीशनल सपोर्ट इन्होंने एक्सटेंड किया है यूक्रेन और यूक्रेनियन लोगों को. This senseless war. यूनाइटेड किंगडम के जो रिप्रेजेंटेटिव अभी Fellow members स्टेज पर हैं, of the United Nations to speak up for Ukraine. इन्होंने कहा कि सारे जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको स्टैंड अप होना चाहिए रशियन एग्रेशन के खिलाफ. इन्होंने अपना स्पीच ख़त्म किया है.
पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया यूक्रेन को इन्होंने भी, यूनाइटेड किंगडम के जो रिप्रेजेंटेटिव है। ये लाइव कन्वेंशन चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी। I now give the floor to the distinguished representative of Georgia. जॉर्जिया के रिप्रेजेंटेटिव अब स्टेज पर आ रहे हैं। जॉर्जिया के रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आ गए हैं। Thank you, Mr. President. अभी इंग्लिश में ही बात My करेंगे। delegation aligns itself हाँ हाँ with the statement delivered by the representative of the European Union, and in my national capacity, I would like to add the following comment. Excellencies, we have gathered today in an emergency session because the Security Council once again failed us in acting as a guardian of peace and security. बड़ा स्टेटमेंट इनका है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का, वो फेल हो चुका है कि जो भी एग्रेशन है ऐसा, जिस जिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है ऐसे वॉर क्राइम्स को रोकना, तो वो फेल हो चुकी है। Against sovereignty, territorial integrity, or political independence of another member तो state. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है, जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि फेल हो चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। What we see in एक Ukraine अच्छी बात is इन्होंने an act कही of है aggression. जॉर्जिया के जो अभी रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर हैं। Last week, I spoke from this very rostrum about Russia's pattern of behavior against its neighbors. Russia's full-scale military aggression against my country should have served as a wake-up call for all. But alas, it has not been possible to prevent a similar scenario unfolding few years later in Ukraine. Not to repeat myself, let me just say that we in Georgia do know what the toll of war is. We do know what it is this disastrous consequences. And that is people, innocent civilians, women and ये children. कह रहे हैं कि जॉर्जिया के लोग समझ सकते हैं कि जो वॉर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लोग सफ़र करते हैं, सिविलियंस जो बेगुनाह लोग हैं वो भी इसके जद में आके सफ़र करते हैं, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स इंश्राइंड इन यूएन चार्टर, ये भी यूएन चार्टर की बात कर रहे हैं कि उसको इन्वोक किया जाना चाहिए यहाँ पे, और जो रशिया है उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया जाना चाहिए। Is illegal and impermissible. Georgia calls on the Russian Federation to immediately cease its military activities and withdraw all its forces and armaments. जॉर्जिया रशिया को एड्रेस ये मैसेज दे रहा है, इनका कहना है कि वो इस इलीगल ऑक्यूपेशन को इमीडिएटली स्टॉप करे, Reverse the decisions related to the status और जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो एरियाज इन्होंने इंडिपेंडेंट अनाउंस किए हैं, उन डिसीजंस को रिवर्स किया जाए। allow humanitarian access, reverse the status related decision with regard to the occupied territories. Georgia was among the co-sponsors of the draft Security Council resolution that got vetoed. And we are the co-sponsors of the draft General Assembly resolution that is soon to be considered. This resolution, although it concerns Ukraine, is a watershed moment for all of us. And I would dare say for the future of the rules-based order and our United Nations. So I call on you to vote in favor of the proposed draft, to vote to save the succeeding generations from the scourge of war, to vote for the United Nations. And in conclusion, we welcome the Secretary General's decision to scale up the United Nations humanitarian operations in around Ukraine. And let me once again reiterate Georgia's unwavering support of independence, sovereignty, and पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया है जॉर्जिया की तरफ से internationally recognized borders, पूरे यूक्रेन को, और and Donbass, and Ukraine's navigational rights. यूएन जो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उनको शुक्रिया अदा किया है उनका कि उन्होंने The distinguished representative of Georgia. यूक्रेन का जो अभी वहाँ पे क्राइसिस चल रही है उसके लिए यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग कन्वीन की है। यूएन जनरल असेंबली की जो इमरजेंसी मीटिंग अभी जारी है,
And now I give the floor to the distinguished representative of Poland. पोलैंड के रिप्रेजेंटेटिव अभी आ रहे हैं स्टेज पे। यहाँ पे जो इमरजेंसी मीटिंग यूएन जनरल असेंबली की बुलाई गई है यूक्रेन में, जो रशिया ने पूरा एक अपना वॉर चलाया है 2 दिन से। Secretary General, distinguished delegates, इंग्लिश में बात Poland करेंगे। fully supports the resolution just tabled by Ukraine and calls on each member state to stand firmly behind it. We deeply believe that through this act, we will demonstrate our adherence to the principles enshrined in the UN Charter. प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर की बात की है कि We can see that हम सबको इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और रशिया को मैसेज देना चाहिए कि वो भी इसका रिस्पेक्ट करे। in that sense, the resolution we are about to vote paves the way to a meaningful diplomatic effort. मीनिंगफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। Poland, as the current chairmanship in office of the Organization of Security and Cooperation in Europe, called yesterday for the immediate ceasefire in Ukraine to let humanitarian organizations. इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए यूक्रेन में रशिया की तरफ से। But these appeals for peace are even more urgent when you look at the events in Ukraine from a close ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो वहाँ पे इमर्ज हो चुकी है और इसको पूरी दुनिया देख रही है और इसको फौरी तौर पे जो है स्टॉप करना चाहिए। There is no doubt that we are confronted with one of the biggest humanitarian crises in Europe since World War II. वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस यूरोप जो वेस्ट में है, ये कह रहे हैं कि रशियन जो एग्रेशन है इसकी वजह से हुई है। 100,000 people fleeing Ukraine, 300,000 of which found refuge in my home country. We keep our borders open. 5 मिलियन लोग अभी 5 मिलियन या 7 मिलियन लोग अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं। जो रेफ्यूजी जो क्राइसिस है वो बढ़ चुकी है। जो पोलैंड है ये एक नाइबरिंग कंट्री है जो यूक्रेन की, ये कह रहे हैं कि अभी तक 300,000 जो लोग हैं वो एज रेफ्यूजीज पोलैंड में आ चुके हैं। 125 nationalities fleeing Ukraine to Poland. So that means it concerns us all. The list of these nationalities are too long to read it to you. So I just read the first those with more than 100 nationals. ये कह रहे हैं कि बहुत सारी नेशनलिटीज़ 150 नेशनलिटीज़ के जो लोग हैं वो यूक्रेन से फ्लड होके पोलैंड में आ चुके हैं। तो हमें किसी एक कंट्री के लोग जो है रेफ्यूजीज़ नहीं है, ये नेशनलिटीज़ अलग अलग हैं इन लोगों की। जो अभी यूक्रेन में लोग रह रहे हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया का जो मसला है, ये किसी एक कंट्री का मसला नहीं है। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अभी यूक्रेन में रह रहे हैं, सेटल हैं, काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया को जो है एकजुट होके इस क्राइसिस को स्टॉप करने की कोशिश की जानी चाहिए। Based on race and religion. I can tell you this is a complete lie and a terrible insult to us. Besides giving refuge, Poland delivers to those who suffer. कह रहे हैं कि जो मीडिया में न्यूज़ आई है कि पोलैंड ने किसी एक रिलीजन के लोगों को अलाउ किया है, ये रिफ्यूट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम रेशियल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते हैं एज अ पोलैंड नेशन। तो हमने सबको जो है यूनिफॉर्मली वहाँ पे जगह दी है रिफ्यूजीज़ को। And the first life-saving operations were carried out for the elderly in our hospitals. और हमने जो है जो इंजर्ड हैं लोग उनको हॉस्पिटल्स में वहाँ पे जगह दी है पोलैंड में। To ease the burden of the civilians targeted by the Russian aggression. तो रशियन एग्रेशन को ये कंडम कर रहे हैं। Is the outpour of spontaneous readiness to help by individuals. Polish families are opening their homes to refugees. जो पोलैंड के लोग हैं वो अपने घरों को ओपन रखा है उन्होंने। जो भी यूक्रेन से लोग वहाँ पे डिस्प्लेस होके आ रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे घर ओपन है, हमारे घर खुले हुए हैं सारे लोगों के लिए जो यूक्रेन से अभी भाग रहे हैं पोलैंड की तरफ। Who stand in lines for hours to donate blood for Ukraine.
The scale of help was offered was so big that the government opened a special website helping Ukraine, where volunteers can register. ये कह रहे हैं कि पोलैंड ने एक स्पेशल वेबसाइट खोल ली है कि यूक्रेन के लोगों के लिए, ताकि वो उनको इजी हो जाए पोलैंड में स्टे करना। Refugees coming directly from the war zone. In this conflict, Poland may not be a geopolitical superpower, but we want to be a solidarity superpower. ये कह रहे हैं कि पोलैंड भले ही एक सुपर पावर ना हो, एक पॉलिटिकल सुपर पावर, लेकिन हम एक सॉलिडारिटी सुपर पावर की हैसियत से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे यूक्रेन के लोग जो हैं बेगुनाह जो डिस्प्लेस हो गए हैं उनके साथ हैं, और जो रशियन एग्रेशन है उसको स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। Living in a village near the Polish-Ukrainian border. When offered a trip to Poland by my family, she answered, "I cannot leave Ukraine now. This is my country. I have to stay and take care of it." And now she ये is कह रहे cooking हैं food for soldiers. बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूक्रेन के जिन्होंने बॉर्डर पे जो है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था कि वो पोलैंड में आ जाए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में मरेंगे। तो एक बड़ा ही एक क्राइसिस सिचुएशन अभी यूक्रेन में बना हुआ है। I am at the Polish ambassador to Ukraine. I work in Kyiv, a city the size of Berlin, inhabited by over 4 million people. ये पोलिश जो एम्बेसडर रह चुके हैं ये यूक्रेन में, Several times a day. अभी जो पोलैंड के जो है अभी डेलीगेट बात कर रहे हैं यूएन जनरल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग में। Detonations. I am convinced that right now, इनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है जो यूक्रेन में जो अभी यूक्रेन में जो एरियाज़ है सिविलियन एरियाज़ है उनको जो टारगेट किया जा रहा है with hope and faith रशिया की in the तरफ से। power of international law. End of quote. इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे इन्वोक किया A है। reference to the warning expressed by a 19th century Russian novelist, Fyodor Dostoevsky. फ्योडोरडोस्की की बात कर रहे हैं, Meaningful title, Crime and Punishment. क्राइम एंड पनिशमेंट जो उनकी नावल The है, message of the book is following. उसकी Someone just like Raskolnikov, उसमें उस बुक की में जो एक मैसेज है उसको यहाँ पे and therefore feels entitled to committing a crime of murder. In the end, he faces the punishment from the crime itself. Because committing a crime is already one's biggest punishment. तो ये कह रहे हैं कि इस बुक में जो लेसन है वो ये है कि कमिटिंग अ क्राइम इज़ ऑलरेडी अ पनिशमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट जो इंसान खुद को दे रहा है अगर ये कोई क्राइम कमिट कर रहा है। एक बहुत बड़ी मैसेज यहाँ पे पोलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्होंने पास ऑन की है। इनका स्पीच ख़त्म हो चुका है। And now I give the floor to the distinguished representative of Austria. ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव अभी आ रहे हैं यूएन जनरल असेंबली में जो अभी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, यूक्रेन रशिया जो सिचुएशन बनी हुई है। Thank you, Mr. President. And as usual, Austria aligns itself with the statement by the European Union. However, we also want to add our voice in our national capacity, because what is currently being deliberately inflicted upon Ukraine. ऑस्ट्रिया के जो मेंबर है ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन जो ऑस्ट्रिया है Let me start by thanking you, Mr. Secretary General. हम भी अपना जो है ओपिनियन रखते हैं जो ये शेयर करना We are चाहते हैं। grateful to see that the United Nations is there to help those suffering and in dire need for help. We meet here today to discuss the Russian aggression against Ukraine, to discuss the violation of Article 2.4 of our UN Charter. आर्टिकल 24 ऑफ यूनियन चार्टर की बात की है कि उसको वायलेट किया है रशिया ने। It's a good thing and a bad thing. It's bad because it means after several days since Russia launched its aggression against the sovereign territory of Ukraine, we are still आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर जो है यूएन जनरल असेंबली का चार्टर है उसको इन्वोक किया है कि रशिया ने आर्टिकल 24 ऑफ
should be addressed by the Security Council. यूएन चार्टर को वायलेट As किया the है. primary responsible for upholding international peace and security, the Security Council cannot remain silent when basic सिक्योरिटी principles काउंसिल कैन are नॉट रिमेन violated. साइलेंट. इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि ये इसका काम है कि जो भी ऐसे एग्रेशंस है The Security Council उनको was रोकना है. by the veto of a permanent member, the Russian Federation. Even though 81 members of the international community supported the draft resolution of the co-pen holders. Yes, the veto power is foreseen in the UN Charter, but so is the obligation to uphold UN principles. If in the 21st century the Security Council is blocked in a situation that constitutes a blatant breach of international law, we should ask ourselves if this system of veto powers is still able to regulate. ये वीटो पावर की बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ने एक Yet, colleagues, रेजोल्यूशन पास किया था, उस पर रशिया ने वीटो करके उसको इनइफेक्टिव बनाया. ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में क्या जो रेजोल्यूशंस है, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ एक रेजोल्यूशन पास करती है, तो क्या एक कंट्री के वीटो से वो सब सारा नलिफाई हो जाता है? क्या ये 21st सेंचुरी में आज की दुनिया में जस्टिस और जो बात की जाती है जस्टिस की, इस एरा में ये स्टिल वैलिड है? एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है. this is our right. This is our obligation as members of the organization. ये कह रहा है कि हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन है कि हम ऐसी सिचुएशन पे ऐसी ऐसी बातों ऐसे जो क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे रेज करें, ताकि जो यूएन यूनाइटेड नेशंस है इसको हाईजैक किया हुआ है कुछ मेंबर्स ने वीटो यूज़ करके, जो भी रेजोल्यूशंस हैं, पीस रेजोल्यूशंस हैं, उनको ब्लॉक करते हैं. इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है. Rule of law, international law, and the UN Charter. By voting yes, we show that these acts and similar horrifying acts are not tolerated by the international community. And most importantly, by voting yes, we show the Ukrainian people that they are not alone. यूक्रेनियन लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं है. इनका कहना है कि हम सब जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, जिन्होंने भी इस मेमोरेंडम को, इस रेजोल्यूशन को साइन किया है, One of our members, वो यूक्रेन के members of साथ this हैं. organization is an attack on us all. In our interconnected world, our world is one region. Cyber weapons strike everywhere. Missiles have global reach. ये कह रहे हैं कि हम ये पूरा एक जो वर्ल्ड है, इट्स अ ग्लोबल विलेज. तो जो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पे भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, इसकी वजह से सारे जो अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री है, जो वर्ल्ड है, उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है. एंड राइटली सो. Would not harm them. But clearly, if you have security concerns, solve them with dialogue. जो भी सिक्योरिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए डायलॉग के ज़रिए, इनका कहना है. It should seek cooperation, dialogue, disarmament, and not force against others. और जो फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, डिसआर्मामेंट, डायलॉग की बात कर रहे हैं. जो ऑस्ट्रिया के अभी डेलीगेट बात कर रहे हैं यूएन जनरल असेंबली की, जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है. Trying to justify evil with past evil. Trying to excuse yourself by pointing to the faults of others. But just because we did not stand up in the past to injustice and evil, that should not prevent us from standing up now. Yes, it's true, others have committed aggression, crimes, and faults. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जिस भी कंट्री का जो भी रिप्रेजेंटेटिव आया, डेलीगेट आया, उसने यही बात की कि यूएन चार्टर जो है, पीस चार्टर जो है, जो जिसको चार्टर ऑफ पीस कहा जाता है, उसको फॉलो करना चाहिए रशिया को. और इनका एक कॉमन जो स्टांस है कि जो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका एक काम है कि ऐसे एग्रेशंस को रोकना. और यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस पे साइलेंट बिल्कुल भी नहीं रह सकता है.
और जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी चाहिए रशिया पे, ताकि उनका जो है वो होश में आ जाए और ऐसे एग्रेशन को वो स्टॉप कर सके। और अभी जो मीटिंग जो है वो जारी है। होप कि इस मीटिंग जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो इमरजेंसी मीटिंग है इसका कोई पॉजिटिव जो है आउटकम आए। एंड जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर जैसी सिचुएशन बनी है वो जल्द से जल्द स्टॉप हो जाए और जो वहाँ के सिविलियंस हैं वो अपने घरों में लौट जाए। और ये जो अभी न्यूक्लियर जो अटैक का थ्रेट है वो टल जाए, क्योंकि इससे पूरी पूरी दुनिया को इससे खतरा है और एक वर्ल्ड वॉर फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकता है। तो होप कि इस मीटिंग का इमरजेंसी मीटिंग का एक पॉजिटिव आउटकम आए। मीटिंग जारी है तो अभी हम आते हैं इसके ऊपर एक और वीडियो में देखते हैं इसका क्या आउटकम है और क्या डेवलपमेंट रहेगी रशिया यूक्रेन के जो अभी सिचुएशन है इनके बिटवीन बनी हुई, तो उसके बारे में और भी बात करेंगे। गुड In this नाइट। regard, we welcome the statement of ICC Prosecutor Khan, reminding us all that his